Right, let's move on to the other big developing political story today. The Mumbai police on Saturday night questioned a pharma company director following information that thousands of vials of the remdesivir drug, a drug that's critical in coronavirus treatment and a drug that's in huge shortage in India at this point of time, were being flown out of the country. Controversially then, in a late-night drama, the opposition leader, the former Chief Minister Devendra Fadnavis, arrived at the police station to say that permissions were in place for the purchase of this antiviral drug. The NCP is now asking, how does a private individual like Mr. Fadnavis procure remdesivir when the sale of this drug is now allowed only to the government in order to prevent black marketing? Here's Purva's report. Former Maharashtra Chief Minister and leader of opposition in the state, Devendra Fadnavis, at the BKC police station late Saturday night, intervening after the Mumbai police detained Brook Pharma owner Rajesh Dokania, who was allegedly moving a truck with 60,000 vials of remdesivir, a crucial drug for COVID patients which is currently in short supply. Fadnavis told the police that it was he who had requested Union Minister Mansukh Mandaviya to supply remdesivir to Maharashtra. 4 दिन पहले हमारे विधान परिषद के विपक्षी नेता प्रवीण दरेकर और विधायक प्रसाद लाड़े दमन में गए थे। ब्रूक फार्मा में जाके उन्होंने वहां पर उनको निवेदन किया कि आपका प्रोडक्शन आप महाराष्ट्र को दीजिए। उन्होंने कहा कि प्रोडक्शन कर सकते हैं, लेकिन हमको एक्सपोर्ट का लाइसेंस है, जब तक हमको परमिशन नहीं मिलती तब तक हम ये माल नहीं दे सकते। तो मैंने स्वयं फिर केंद्र सरकार में आदरणीय मनसुख भाई मांडविया जी से बात की। मनसुख भाई मांडविया जी ने उनका टाइप रेड्डी से कर दिया ताकि उनके लाइसेंस पर ये प्रोडक्शन कर पाए। हम गुड फेथ में एक्ट किया है और उसका इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, और जो भी ऐसे स्टोरेज करने के लिए इलीगली जो रख रहे हैं उनके ऊपर हम डेफिनेटली लीगल कार्रवाई करेंगे। Cabinet Minister Nawab Malik questioned Fadnavis's motives and defended the police action. जब कोई पूछताछ चलती है तो नेता विपक्ष के दोनों नेता, उनके विधायक पुलिस स्टेशन में जाके अधिकारियों से सवाल जवाब करने लगते हैं। क्या कनेक्शन है भारतीय जनता पार्टी का? But another cabinet minister, Aditya Thackeray, says the issue should not be politicized. Where we are trying to restrict hoarding or black marketing of remdesivir, I think everyone, all of us as political parties should come up, work together for the state and the country today. We cannot be taking individual credit for, okay, who got these vials, from where we got these vials, and we're giving it to the government or the people. I think it's for all of us to really be responsible right now, step up above politics. The state is facing a shortage of oxygen beds and crucial medicines, but the state and centre are trying to politicize the issue. The need of the hour is for the government and opposition to come together and work and save people's lives. In Mumbai, this is Purva Chitnis for NDTV. Joining us now, Asif Bamla, spokesperson of the BJP from Maharashtra, and Sanjay Gupta, leader of the Shiv Sena. Mr. Bamla, to you first, stories of a shortage of remdesivir are everywhere. You go on social media and all you see are people begging anyone for help. How can they get access to remdesivir? Then you have video. Mumbai police saying, they managed to stop remdesivir from being stored. It could have then been black marketed. And they're asking, why is a former chief minister intervening in their investigations? What's going on here, sir? We are aware that Maharashtra is the worst affected state with 6,47,930 active cases. We have 1,20,000 in Mumbai. And we are aware that 1,000 people have lost their lives. In a situation like that, when there is critical shortage of remdesivir, if a leader of opposition, he planned to provide this medication 4 days back, and it wasn't possible. So he spoke to Mr. Mansukh Mandaviya, and the approval of the FDA, they're trying to procure this for the people of the state. And I don't think that's a crime. But sir, you are not the government anymore in the state. No, that is the government's job. And there is a law that this drug can only be sold to the government. Let me submit. The distribution system was to happen through the minister concerned, Mr. Shinde, who was aware about it. And the cost of 4,75,000 would be incurred by Devendra Fadnavis ji
and he would give this away to the Honorable Chief Minister Uddhav ji. So there is nothing wrong in that. That is what we're trying to say. Just few days back, we had the Honorable Chief Minister praising. So was this the about a Prime photo Minister op? for having? Let me complete, Shara. Having given the permission for the Hapkin, thing. Today we saw Piyush Goyal ji also sending the consignment for the liquid oxygen. So we have to have a camaraderie between the state and center and ensure that we curb and come above politics for and in interest of this indivisible enemy. That's the second wave of COVID, I think. And black marketing, I think the Honorable Prime Minister was very strong enough to say that we have to curb black marketing in the interest, and it's given these medical guidelines already to ensure that there is no misuse and black marketing happening. So I don't see. So was this about a photo op then for Mr. Fadnavis to be able to hand over these vials of remdesivir to the Chief Minister, just as we saw in Indore? You have BJP leaders holding up an oxygen tanker to take photos with it, that eventually led to the delay of this tanker reaching its destination by 2 hours. Mr. Gupta, you have the BJP saying they were only trying to help. Your response? क्या हो रहा है यहाँ पे? हेल्प मतलब क्या, मतलब किस तरह से काम कर रहे हैं, किस तरह से रिएक्शन कर रहे हैं, मेरी बात ये समझ में नहीं आ रही है कि कोई काम सरकार का है जो सरकार ने करना है। रेमडेसिविर इंजेक्शन जो है उस पर सरकार ने बैन लगा रखा है कि किसी भी तरह से इसको निर्यात नहीं किया जाएगा, बिना सरकार की मर्जी के इसको बेचा नहीं जाएगा, और एक कंपनी उसकी जमाखोरी करके बैठी हुई है। 60,000 इंजेक्शन, नहीं आप बात पूरी होने दीजिए। 60,000 इंजेक्शन। सर प्लीज लेट हिम फिनिश। This company, Mr. Bhamla, please let him finish. We'll come back to you. Mr. Bhamla, please let him finish. We'll come back to you. Go on. 60,000 इंजेक्शन वो कंपनी जमा करके बैठी हुई है, और इस तरह की खबर थी कि वो महाराष्ट्र से उसको बाहर भेजने वाली थी, और पुलिस ने खबर के और इंफॉर्मेशन के अनुसार उसको पकड़ा, और उस जमाखोरी को जब पकड़ा तो आपके नेता वहां पर पहुंच जाते हैं उसको बचाने के लिए। मतलब एक कंपनी जिसपे सरकार ने बैन लगा रखा है, एक रेमडेसिविर इंजेक्शन जिसपे सरकार ने बैन लगा रखा है कि आप इसको निर्यात नहीं कर सकते, बिना सरकार की मर्जी के बेच नहीं सकते, उस इंजेक्शन की 60,000 मात्रा में उसकी कोई जमाखोरी करके बैठी है कंपनी, और वो उसको महाराष्ट्र से बाहर भेजने के लिए तैयार बैठी है। और अगर पुलिस उसको पकड़ लेती है तो आपके नेता पूर्व सीएम वहां पहुंच जाते हैं उसको बचाने के लिए। ये किस तरह की राजनीति है? मतलब ये सरकार, देवेंद्र फडणवीस जी कभी इस बात को समझेंगे कि वो चीफ मिनिस्टर नहीं है? मतलब कि क्या क्या दिखाना चाहते थे वो? एक कंपनी जमाखोरी कर रही है किसी दवाई की इस कोरोना काल में, जो कि कोरोना काल की एक तरह से जीवन दवाई है, तो इस तरह की राजनीति किस लिए कर रहे हैं वो? क्या सरकार खुद चलाना चाहते हैं वो? जो काम सरकार का है। Mr. Bhamla, you say this, there's nothing political about this. The BJP was simply trying to help. But look at your track record when it comes to this, because last week the Gujarat BJP controversially distributed remdesivir injections from its party office to its cadre. वो वहां पहुंचे थे रेमडेसिविर बचाने के लिए, ताकि महाराष्ट्र की जनता तक ये जो औषध है, जो बड़े जिसकी किल्लत है पूरे राज्य में, उससे राज्य तक पहुंचाया जाए, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को दिया जाए। राज्य में तो थी वो, निवारण किया है राज्य के अंदर जो दवाई राज्य के अंदर इसको बचाने के लिए परमिशन FDA से permissions were procured from the FDI, and Honorable Minister for Food and Drugs, Mr. Shinge, was aware of the plan, as the distribution would obviously happen through the network of the states. Devendra Fadnavis would have not distributed that. He would have procured that with his own funds, and he would have delivered the same to the Honorable Chief Minister in the interest of the state. यदि कोई किसी स्टेट को, राज्य को मदद करना चाहे, वो कोई आम आदमी हो सकता है, वो कोई खासदार हो सकता है, आमदार हो सकता है, कोई मंत्री हो सकता है, अपने व्यक्तिगत स्तर पर यदि वो मदद करके सहयोग देना चाह रहा है तो ये कोई गलत बात नहीं। और आज ऐसा दौर है जहां पर जिंदगियां बचाना जरूरी है, चाहे वो देवेंद्र की बचाए या उद्धव जी बचाए या कोई भी बचाए, हम मानवता के चलते सारे लोग। आज आप देखिए, मुख्यमंत्री जी ने स्वयं प्रधानमंत्री जी की सराहना की, क्योंकि जो पहला जो प्रोजेक्ट आ रहा है फॉर द मेडिकेशन वाज अप्रूव्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर। आज आप देख रहे हो कि इसका जो सप्लाई की किल्लत राज्य में
So, Piyush Goyal Mr. Bhamla, suddenly so much bonhomie between you and your former ally, the Shiv Sena, even though just 24 hours ago you had Maharashtra Minister alleging that the centre had asked for remdesivir manufacturers not to be supplying specifically not to Maharashtra. But Mr. Gupta, quick closing argument to you, please respond. इनका सिर्फ एक ही मकसद था कि किस तरह से वो इंजेक्शंस को महाराष्ट्र से बाहर भेजा जाए, जिससे कि महाराष्ट्र सरकार को बदनाम किया जा सके। और जब महाराष्ट्र पुलिस ने उस इंजेक्शन को पकड़ लिया, और जब महाराष्ट्र पुलिस ने उस इंजेक्शन को पकड़ लिया, तो उनको सेव करने के लिए, अपनी कालाबाजारी को छुपाने के लिए इस सब वहां पहुंच गए। मतलब महाराष्ट्र सरकार को बदनाम करने के लिए ये लोगों की मौत के साथ भी खेल सकते हैं। इन्होंने इस बात को प्रमाणित किया है वहां पर पहुंच करके, और इस तरह की घटिया राजनीति इन्हें नहीं करनी चाहिए। मैं बस इतना कहना चाहूंगा। All right, this coming in, this controversy, the latest controversy, the political fracas between the BJP and the NCP coming as Maharashtra has logged over 68,000 coronavirus cases and 503 fatalities in 24 hours. Thank you so much, both of you, for joining us on Left, Right and Centre tonight.